Good morning, everyone. How are you? You are fine? Okay. Welcome to your YouTube class. Dear students, आम प्रीवियस क्लास रे ए ग्रेडिफाइड ओल्ड मैन 3 रो आम क्वेश्चन आंसर करथिले कि नहीं। आज आम ए ग्रेडिफाइड ओल्ड मैन पार्ट 3 रो 6 नंबर पर्यंत करथिले। आज 7 नंबर ठो करबा। ओके, देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। Who came out? Who came out? Who came out? आंसर कौन हबो? The little boy and the small dog came out. Okay, तापर नंबर 8 क्वेश्चन देखा। Why was the squirrel out? Why was the squirrel out? आंसर कौन हम किए कही पार? Who can say? The squirrel was out because he was never in. समझ तो बुझ पाइला? नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, did you like the story? Did you like the story? आंसर कौन हबो? Did you like the story? आंसर हबो yes, I like the story। नहीं, yes, I like the story। नंबर 10 देखो। Whom do you like most? Whom do you like most? You like most the boy, the dog, or the squirrel? And why? Whom do you like to most, like the boy, the dog, or the squirrel? And why? Answer, I like the squirrel most। नहीं, I like the squirrel most। I like the squirrel most because the squirrel is very active. The squirrel is very active. The squirrel is very active and clever. Active and clever. Okay.
समस्ते क्वेश्चन आंसर लिखि सारे लिखेबी तापर मैंने आम सेशन 2 रो क्वेश्चन आंसर करवा सेशन 2 रो क्वेश्चन आंसर करवा है सेशन 2 रो 2 नंबर देख 2 नंबर बीटा 2 रो बीटा टीचर इट्स अलाउड द लास्ट पैरा ऑफ द स्टोरी you listen to him her attentively and fill in the gaps तुम टीचर लास्ट पैराग्राफ स्टोरी लास्ट पैराग्राफ पढ़े एवं तुम्हें भल भाव शुणव एवं फिल इन दी गैप्स गैप गुड़ाक फिलअप कर ओके तो आम लास्ट पैराग्राफ पढ़ा The little boy came out, the little dog came out, and the squirrel was also out because he was never ever in. तो हम फिलअप करिबा the little dash came dash the little dash came out and the squirrel was out because he never ever dash. So the little boy came out. The little boy came out. The little dog came out, and the squirrel was also out because he was never ever in. है बुझिपार आउ थे पढ़ी दूँ देख पैराग्राफ द लिटिल बॉय केम आउट द लिटिल डॉग केम आउट एंड द स्क्विरल वाज आल्सो आउट बिकॉज ही वाज नेवर एवर इन. समस्त लिखी सारे कॉपी तो मुझे लिखी दूची तापर आम सेशन 4 राइटिंग पार्ट करबा. सेशन 4 देची राइटिंग फर्स्ट क्वेश्चन देची whom did the old man meet in this section? whom did the old man meet in this section. आंसर कौन हवा the old man met a little squirrel. किसी मन रखना रे the old man met a little squirrel
in this section. नहीं तो क्वेश्चन पचारा whom did the old man meet in this section? The old man met a little squirrel in this section. तापर नंबर 2 जीवा नंबर 2 क्वेश्चन कौन दीजिए where did the squirrel jump up fast आंसर कौन हवा the squirrel jumped of the tree fast then it jumped to the main branch of the tree. ओके तो नंबर 3 देखो नंबर 3 क्वेश्चन दीजिए why did the old man fall down? Why did the old man fall down? Answer about the old man fell down. The old man fell down. The old man fell down because the thin branch broke. The thin branch पतला branch टे भांगी गला. The thin branch broke. The old man fell down because the thin branch broke. समझते कॉपी लिखी चलोनी तो लिखी होची फोटो देखो नंबर 4 क्वेश्चन Who do you like most? Who do you like most? Who do you like most? हम लिखा I like the squirrel. I like the squirrel. Squirrel most. I like the squirrel most because कारण कौन कारण the squirrel is very active agile and clever नहीं समस्त लिख कॉपी लिखि सारे तो सेशन 4 आमर कंप्लीट है तापर देख सेशन 5 देख सेशन 5 रे देखो क्वेश्चन प्रोवाइडेड बिलो an omelette meal packet तले गोटे omelette meal packet रा दिया read the English written on it हैला fill in the form first प्रथमे तमे कौन फॉर्म टी फिल अप करो then write a paragraph based on the fill in form तापरे
गोटे पाराग्राफ लिख बेस्ड ऑन द फिल्ड इन फॉर्म फॉर्म जहाँ लिखि गोटे पाराग्राफ लिख तो फॉर्मटा देख नेम ऑफ द मिल्क नेम ऑफ द मिल्क बुक चित्रटी देखा से ओमफेड पैकेटा नेम ऑफ दी मिल्क कौन लिख ओमफेड टोन मिल्क नेम ऑफ द मिल्क नेम कौन मिल्क नेम हो ओमफेड टोन मिल्क ओके तापर दुई देख नेम ऑफ द कंपनी नेम ऑफ द कंपनी COMPANY आगुरी पार्ट 1 करे पार्ट 2 रे भी करे एमतिया ए टाइप रो हैला गोटे फास्ट देथिला कोलगेट पेस्ट रो ता कैप देथिले त हम प्राइस लिखले को कंपनी लिखले वेट लिखले तापरे एटा देछि ओमफेड रा नेम ऑफ द मिल्क ओमफेड टोन मिल्क नेम ऑफ द कंपनी को कंपनी ओमफेड तापरे 3 देख साइज ऑफ द पैकेट साइज ऑफ द पैकेट साइज ऑफ द पैकेट स्मॉल ना बिग स्मॉल बा बिग कौन लिखा बिग नहीं तापर देख फोटा क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क केते 500 ml नहीं तापर 5 टा देख डेट ऑफ पैकिंग केबे पैक करथिला डेट ऑफ पैकिंग डेट ऑफ पैकिंग हम लिख देबा कोन नॉट विजिबल on the packet तापर नंबर 6 तक प्राइस से ओमफेड पैकेट प्राइस केते प्राइस RS केतना ना 19 टंका ना नहीं समस्त बुझी पाइले तो आमे प्रीवियस क्लास गुड़ाक भी करमतिया बुझे नहीं गोटे न्यूट्री चॉइस बिस्कुट पैकेट देता ता ऊपर लिखी गोटे जो कोलगेट पेस्ट कैप विषय लिखी तो यहाँ देखिए एग्रेडी फैट ओनली 3 रो कौन देखिए ओमफेड पैकेट तो आम पाराग्राफ लिखा है एगुटा सब लिखी सारा लिभे दूचे पाराग्राफ लिखा फर्स्ट कौन लिखा द नेम ऑफ मिल्क इज ओमफेड टोन मिल्क तब लिखा इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओमफेड कंपनी नहीं ओमफेड कंपनी COMPANY तब इट come in a big size
বা big packet, big packet नहीं the net content of the packet is the net content of the packet is 500 ml milliliter. तापरे the manufacturer the manufacturing date केबे मैन्युफैक्चरिंग हेतला the manufacturing date लिखिबो date of packing the date of packing of this product cannot be known from the given images नहीं the label on the packet says C bottom inverted comma रखिबो C bottom for batch number, date of packing and used by date. तब its selling price is Rs 90 rupees only. बुझेला आउथरम पढ़ी रखुछ देख पैराग्राफ टी the name of milk is Omfed Tone milk. It is manufactured by Omfed company. It comes in a big packet. The net content of the packet 500 ml. The manufacturing date of packing of this product cannot be known from the given images. The label on the packet says C bottom for batch number, date of packing and use by date. Its selling price is Rs 19 rupees. Okay, এটা নোট ডাউন কপি লিখছে সমস্তে লিভ হচ্ছে तापर सेक्शन 6 देख राइट योर ओन स्टोरी है The old man met a boy, a dog and finally a squirrel. You can add one more character before squirrel or after the boy a cat, for example. Next you can write a part of the story based on the new character. While writing the story, you can see that part of the story and copy most of the lines from each. तो आम लिखा after eating
After eating the boy, the old man walked. The old man walked till he met a dog. So write your own story. तेणु तमें he met a dog और लिखिबा or you can say a cat. You can say cat or anything you like, or anything you like, or you ହେଲା the dog asked लिखिबो the dog asked old man what makes you so fat? Hello. The old man said I have taken a very heavy breakfast. In my breakfast, I took 2 mugs of tea, 2 liters of milk, 3 tins of biscuit, and 5 big pieces of cakes. Then I ate a small boy will eat you of it. I can catch you saying this. The old man caught the dog and ate it up Okay. After eating the boy, आउथर पैराग्राफ तो पढ़ी देउछ क हम निजे से कौन कर देखछि से देछि write your own story. So after eating the boy, the old man walked till he met a dog, or you can say cat or anything you like. So the dog asked old man, what makes you so fat?
The old man said, I have taken a very heavy breakfast. In my breakfast, I took 2 mugs of tea, 2 liters of milk, 3 tins of biscuit, and 5 big pieces of cakes. So then I ate a small boy. I will eat you up. I can catch you saying this. The old man caught the dog and ate you off. तो आज ये था। नेक्स्ट क्लास में नुआ चैप्टर पढ़ा। बाय।